आपने जीआरसी के फर्स्ट वाले में जो दिखाया था एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में, वो जो भी पूरा प्रोसेस दिखाया था वो सारे चीजों को मिला के बोलते हैं क्या यूजर प्रोविजनिंग, हाँ, या फिर किसको बोलते हैं? वो पूरा फुल सेशन। सो दिस इज आई थिंक 15th को हमने किया था। या ये पूरा जो भी इसमें लिखा हुआ है, यू हैव टू हम्म क्रिएट, मतलब यूजर क्रिएट करना है हर सिस्टम में। सो राइट फ्रॉम इनिशिएटिंग दैट रिक्वेस्ट टिल द हम्म क्लोजर, मतलब इनिशिएट किया, अप्रूवल हुआ, अप्रूवल व्हेन, अप्रूवल वन, एंड हम्म देन वो रोल ओनर के पास गया अप्रूवल के लिए, उधर से अप्रूवल मिला। वंस दैट इज डन, देन द यूजर इज हम्म, प्रोवाइडेड एक्सेस। आफ्टर दैट दिस JRC रिक्वेस्ट इज सेट टू बी completed, and then वो close होगा। So basically right from the अच्छा initiating part till the user provisioning, मतलब till the user gets access, the entire process is user provisioning. Entire ओके process is ओके। called access request management. Okay. हम्म। और कोई इश्यू, लाइक वो रेगुलर जो सपोर्ट वर्क है या रेगुलर जो काम रहेगा हम्म, उन दोनों वीडियोस में से कुछ भी? मुझे मुझे SU24 वो टेबल वाले अपडेट्स ना मुझे थोड़े फिर से बोल देंगे? ओके। मतलब हाँ, जब एक नया टी कोड ऐड होता है हम्म। तो कैसे एग्जैक्टली हम वो पूरा ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो नए क्रिएट होते हैं वो कैसे ऐड करते हैं? आपने बताया था, मैंने देखा भी था, हाँ। लेकिन वो थोड़ा मतलब थोड़ा ये लग रहा है, मतलब अगर कुछ ऐड करेंगे नया तो। ओके, मैं एक बार जरा रेसिपी को स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ, बिकॉज इसमें फिर दिखा पाऊंगा और अच्छे से। मीनवाइल मैं आपको वर्ड भी समझाता हूँ थोड़ा सा। आह, so let us start. तो बेसिकली होता क्या है, whenever we have a new T code, we have to, ये मैं इसमें क्यों लिख रहा हूँ, I should not even open up a new tab. So for a new T code, इसको font, we have to do SU24. तो SU24 will bind the authorization object with the T code, the required authorization object with this T code. So how programmatically it is done is, on the program level, the developer or the mapper has to maintain these authorization objects in the statement authority check. We called it authority check statement. उसका syntax भी ऐसे authority check ऐसे करके होता है। तो once they declare it at the program level, then the next thing is you have to and then after when you do SU24, that will get automatically pulled. And you can also add these authorization objects from SC93. SC93 will not add the object in the role or in the T code, but it will add the object as similar to authority check statement. Okay, तो फिर आप जब SU24 करेंगे, so basically SU24 will pull all these values from the system, from the program. Okay, तो when you do SU24, which tables get impacted, जो आप करेंगे उसका result इन दोनों tables में store होगा, USOBX underscore C and USOBT underscore C. So whatever you do, the results will get stored in these two tables. First वाले में it will contain uh, the check flags, whether it will check these authorization objects
at the time of loading that T-code for that user or not, yes or no will be maintained in USOBX underscore CMA. And wherever there is a yes, means check proposal is yes, यहाँ पे yes and no check proposal भी आप maintain करेंगे USOBX underscore CMA. So whatever I'm saying कि वो yes है या no है, basically that authorization object needs to be checked at the time of T-code loading, and also if the proposal, if there is any proposed value for that particular authorization object, that will also be checked. USOBT underscore CMA, it will contain the value of whatever proposal you want to make, or maybe the proposed value will contain the proposed value. So that's how these two tables will get impacted. अब SU24 करते कैसे हैं? Let's see that. कि तो खुल गया है. अभी देखिए कितना स्लो हो गया मेरा सिस्टम. ये एक तो विंडोज 10 है, वो ऑलरेडी भारी है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट ये SAP डाल दिया तो बिल्कुल धीरे 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 चलता है. ओके, मतलब वो नई वाली चीजें जो भी आई हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह एंड ऑल दैट, वो उन्होंने प्रोग्राम में ऐड किया. राइट. मतलब हाँ, उन्होंने प्रोग्राम में ऐड किया, और उसके बाद वो डायरेक्टली आके, मतलब हमको मैन्युअली ऐड करना पड़ता है क्या जो सारे नए चीजें, मतलब टेबल्स में मैं बोल रही हूँ. अच्छा, अगर क्या ये होता है ना कि अगर उन्होंने ऐड किया है प्रोग्रामेटिकली, एंड इफ दे हैड हम्म. डिक्लेयर्ड दोस वैल्यूज, डिक्लेयर्ड दोस ऑथरेशन ऑब्जेक्ट्स, देन तो इट विल हम्म. कम ऑटोमेटिकली. ठीक है. अच्छा. अगर उन्होंने नहीं किया है डिक्लेयर, ठीक है, हम्म. तब आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा. सो द क्वेश्चन इज हाउ विल यू नो व्हाट इज नीडेड, राइट? हाँ, वही क्वेश्चन है. हाँ, तो करेक्ट. क्या होगा कि मान लीजिए आपको पता नहीं है, ऑब्वियसली आपको पता नहीं है कि क्या करना था, क्या क्या ऐड करना था. यू डिड एस यू ट्वेंटी हम्म. फोर यूजल वाला, आप जस्ट गए SU24 में, एंड देन यू केव द हम्म. टी कोड. सो लेट्स डू दैट वंस. सो वी आर टेकिंग अ डमी एग्जांपल wherein I want to add, ये तो हो गया, या SE16 पे करते हैं. So when I click on execute, so this is SU24 का screen. When I click on हम्म. execute, I want to maintain this assignment of authorization object. So I execute whatever is already assigned with SE16. When I say whatever is already assigned with SE16, that would mean whatever is already there in the system, because ये existing हम्म. decode है. अभी नया decode होता हम्म. तो यहाँ पे सब कुछ हम्म. blank दिखता, मुझे खाली दिखता. अच्छा. That means it doesn't have any authorization object. तो अभी मान लीजिए मुझे SE16 को maintain करना है, तो this is this display. तो जो कस्टम हम्म. टी कोड मिलेगा इनिशियली, दैट विल बी ओनली डिस्प्ले, मतलब उसमें हम्म. कुछ नहीं होगा, तो डिस्प्ले पे जब जाएंगे तो देन यू हैव टू गो टू चेंज मोड. एज सून एज यू क्लिक ऑन चेंज मोड, whatever is being programmatically declared, that will get populated on this section. Okay, तो अब यहाँ पे मैंने जैसे चेंज मोड पे गया, नाउ यू कैन सी आई कैन हम्म. मेंटेन ऑल दिस चेक इंडिकेटर एज चेक, एंड प्रपोजल हम्म. यस और नो. आई हम्म. कैन मेंटेन दिस. तो यहाँ पे केवल ये मेंटेन करने को बोला है. हम्म. sm24tab_disk को yes किया है. Now I can here, now I wanted to add a sabu name. So I clicked on add an object. Adding an object is stabu_name. अच्छा, अभी इस वाले केस में let's not do this. तो अभी हमने किया SU24 स्टैंडर्ड, जैसे चेंज मोड पे गए, कुछ यहाँ पे ऑथरेशन ऑब्जेक्ट्स आ गए, उसका चेक था या नहीं था, यू डिडंट डू एनीथिंग, आपने बस इसको हम्म. सेव कर दिया. once you clicked on हम्म. save, it will ask you for a workbench tr. यहाँ पे मुझे एक workbench tr देना पड़ेगा. ठीक है, ये हम्म. this is regular work.
तो वर्कबेंच टीआर दिया, देन उसको मैंने डेवलपर को बोला कि आई हैव एडेड माय चेंजेस टू योर वर्कबेंच टीआर या व्हाटसएवर, या हमारे पास खुद का एक वर्कबेंच टीआर था, हमने उसमें डाल के सेव किया एंड देन वी रिलीज दैट। अब वो रिलीज करने के बाद में वो क्वालिटी में पहुंचा। नाउ आई हैव टू आल्सो असाइन दिस टी कोड टू सम ऑफ द रोल्स, करेक्ट? हम्म तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने ऐड किया एक किसी रोल में वो टी कोड नया वाला, एंड देन आई शिफ्ट इट टू क्वालिटी सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम जाने के बाद में वहां पे आई क्रिएटेड अ टेस्ट आईडी, जिसमें वो जिसमें वो मैंने रोल दिया, एंड देन आई गेव द टेस्ट आईडी टू द टेस्टर। यहाँ पे टेस्टर वुड बी माय बिजनेस या फंक्शनल गाय, फंक्शनल पर्सन। तो मैंने उसको वो टेस्ट आईडी दिया। ही विल एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन एंड देन ही विल चेक कि अरे कुछ मिसिंग ऑथराइजेशन दिखा रहा है। वी हम्म विल बी लाइक मैंने तो SU24 पूरा किया था, दैट वाज नथिंग मिसिंग देयर। सो ही इज लाइक नो नो कुछ और दिखा रहा है प्रॉब्लम, मैं आपको भी बताता हूँ। तो वो SU53 देगा, देन वी विल फाइंड आउट कि ये ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट मिसिंग है। जैसे अभी हमारे SE16 के केस में एक दिन हम लोग जब वो पढ़ रहे थे टेबल मेंटेनेंस या टेबल रिस्ट्रिक्शन, उस टाइम पे एक जगह हमने देखा था s अंडरस्कोर टैबू अंडरस्कोर NAM से हम कुछ भी दे रहे थे वो बाईपास कर रहा था। हम्म यू रिमेम्बर? एस टैबू डिस्क में जो हम्म भी ऑब्जेक्ट दिया था, टेबल ग्रुप दिया था, इट वाज एग्जीक्यूटिंग दैट, लेकिन एस टैबू नाम में भी अगर हमने कुछ मेंशन किया था, इट वाज नॉट चेकिंग इट। सो दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम विद द असाइनमेंट्स ऑफ द ऑथरेशन ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से डेवलपमेंट में जाएंगे एंड देन अगेन SU24 में जाएंगे। ये स्क्रीन आया, मैंने नया टी कोड दिया, यहाँ पे अगेन आई एग्जीक्यूट दिस। सो विद दैट SU53 जो उस बंदे ने दिया है, यू फाउंड आउट देयर इज वन मोर ऑथरेशन ऑब्जेक्ट दैट इज मिसिंग। ओके, तो हम्म यहाँ पे जाके देन वी कैन क्लिक ऑन चेंज मोड। तो अब जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो पुराने वाले सब यहाँ पे दिखा रहा होगा। वी कैन जस्ट क्लिक ऑन ऐड s underscore taboo underscore NAM, click on add, it got added. See, this one is got added. Sorry, let's try to this as taboo name अब ये आ गया। यहाँ पे activity I want to maintain as change and display, मैंने ये मेंटेन किया। एंड टेबल की वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं दी। आई हम्म हिट ऑन सेव। तो मैंने यहाँ पे चेक मेंटेन किया, चेक दिस ऑथरेशन ऑब्जेक्ट, एंड इसका प्रोपोजल भी यस किया ताकि आई कैन मेंटेन सम वैल्यू हियर। मैं इसको अगर नो कर दूंगा, लेट मी कैंसिल दिस, अगर मैं इसको नो कर दूंगा तो it makes no sense now। तो इवन इफ आई मेंटेन्ड एज नो, मतलब जब यहाँ नो कर दूंगा तो इस सेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, now let me try to save this and save this to a workbench tr। so I'm trying to create one workbench tr here, and then SE16 change, project कुछ भी हो सकता है, whatever is there, click on save। So see, it just taking a workbench request, it is already creating a workbench request, so this is a workbench request। now if I click on save, okay, it captured, so estabunam capture हो गया। now whenever I will include SE16 into any of my roles, it will pull estabunam। so let's see that as well। Z security SC16,
is estabudis table group and this is estabunam. तो अभी हमारा जो पुराना वाला सिनेरियो, नाउ इफ यू रिमेम्बर, जहाँ पे सिर्फ ये हमने टेबल ग्रुप ऐड करना था, टेबल्स ऐड करने थे, तो उसका हमने पहले टेबल ग्रुप ऐड किया एंड देन वी वर व्हेन वी वांटेड टू गिव ओनली वन टेबल एक्सेस, तो वो हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे बिकॉज इट वाज नॉट चेकिंग एस्टाबोनाम एट ऑल, लेकिन अब वो चेक करेगा यहाँ पे. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू SU24. और SU24 का इम्पैक्ट क्या होगा वो भी आपने देख लिया. इट गेट्स ऑटोमेटिकली वॉट एवर इज मेंशन्ड इन SU24, इट विल गेट ऑटोमेटिकली पुल्ड. सो ये ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स दोनों चेक मेंटेन थे, दैट्स व्हाई दे गॉट इंसर्टेड. और क्योंकि इनकी प्रपोजल यस मेंटेन था एंड द प्रपोज्ड वैल्यूज वेर 03 फॉर estabudis, let me show you that as well. Estabudis, so see, estabudis के लिए 03 है एंड estabunam के लिए हमने estabunam के लिए हमने 0203 दोनों लिया था. So in my role also estabudis के लिए activity 03 आया है एंड estabunam के लिए activity 02 and 03 आया है. Got it? So when you do SU24, you're basically telling the system that this particular T code, whenever it is added to any of the role, pull these authorization objects automatically. तो हमारे केस में अगर उन्होंने मेंटेन नहीं भी किया है, at the time of testing they would run into an authorization error and then you will have to do SU24 again just to add those authorization objects into back into that T code. So there are two things that you can do to handle that situation. One is you add that authorization object. अगर मान लीजिए कुछ missing authorization object आया है, you add that authorization object to the role where it was, where the T code is added to. Okay, first is this. Either you do this or you change SU24. So what option will you choose? रोल में चेंज करेंगे. देखिए अभी जैसे रोल में मान लीजिए हम चेंज करते हैं, so what will happen is tomorrow if another role needs that same T code, अच्छा, मुझे फिर से जाके उधर तो का चेंज आपको करना. फिर से उस रोल में ऐड करना पड़ेगा. तो ये तब तक हैंडल किया जा सकता है जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं. वंस यू आर गॉन, तो फिर पीछे से किसको कैसे पता लगेगा. सो दैट दैट विल बी अ रिकर्शन वेयर इन वो टेस्ट सिस्टम में जाएगा. व्हेन दे टेस्ट इट दे विल गेट दिस ऑथेंटिकेशन इशू एंड देन दे विल रिपोर्ट इट एंड देन इट विल बी एडेड मैन्युअली टू द रोल अगेन. ओके, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा. तो टू शॉर्टन अप, or the best practice from that is suggested from SAP is whatever is assigned or whatever is related to a T code, whatever authorization objects are related to the T code, you should declare and assign them in SU24 so that ये future वाले problems कभी ना आए. Okay, so that's the use of SU24. ओके. और कोई डाउट और कुछ? GRC access control is like ARA, ARM and EAM. Now you know what is what and what is what. तो इसके लिए इससे ज़्यादा at this point of time it's not much of use. हम लोग कल जब वो करेंगे ना एक और सेशन, तो GRC का I'll try to share some screen, मतलब screen content if I can, you know, buffer or something करके कुछ. I'm thinking of a plan that I can, you know, show you some GRC screens. So if everything goes fine then I will be able to, otherwise तो भी चल ही रहा है वही है. Because जितना आपने करना है that I will be able to show you कि ये ऐसे ऐसे किया जाएगा. और इसी के क्वेश्चन में और कुछ भी डाउट है? जैसे SU24 अभी अभी क्लियर हुआ SU24 थोड़ा सा? हाँ हाँ हुआ. ओके. नहीं, ये आपने ऑलरेडी बताया हुआ था, मैंने देखा भी, लेकिन हाँ, वही नहीं थोड़ा कंफ्यूजन सा it's होता है. important that you know what you are doing in the system,
because आप SU24 सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, you'll find out multiple things, multiple you know ब्लॉग्स अबाउट SU24, लेकिन एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज द नीड। अभी जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि आगे जा करके अभी इसमें रोल में ऐड करना बेटर है या SU24 में, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मतलब उसको रोल में ऐड कर दो ना, रोल में तो वैसे भी ऐड करते हैं, दैट्स अ यूजुअल नोशन, लेकिन इफ यू थिंक ऑफ द लॉन्गर रन, देन SU24 मॉडिफिकेशन इज मस्ट। और एक बार कोई टी कोड अगर ऑर्गेनाइजेशन में पुराना हो जाता है ना, पुराना एज इन 2-3 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, तो क्या होगा ना कि पीपल दे लूज इंटरेस्ट फॉर डूइंग SU24 फॉर दैट टी कोड। तो उसमें क्या होता है ना, सब लोग फिर मैनुअली मेंटेन करते ले जाते हैं रोल्स को, एंड इन द एंड दैट टी कोड बैकफायर्स, क्योंकि किसी नए टी कोड में, किसी नए रोल में ऐड करना रहेगा, एंड देन वो दे विल फाइंड आउट कि अरे इस टी कोड की वजह से कितने सारे रोल्स में मैनुअल असाइनमेंट्स हुआ है ऑथरेशन ऑब्जेक्ट पे। सो दैट इज अ बैड प्रैक्टिस। फिर वो लोग डिगिंग करने शुरू कर देते हैं, ये किसने बनाया था, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर SU24 फॉर दिस चेंज, किसने टी कोड ऐड किया है, किसने मॉडिफाई किया है, एंड ऑल दैट। सो थिंग्स विल कम बैक टू यू if you are still with that company. If not, then somebody else would be taking care. It's not your fault. But the best practice from SAP is whatever you want to be a part of a T code, you declare it in SU24. So what will happen is, once you create a role, assign this T code, everything, all the authorization objects inside it, they will look like this. ऐसे standard, 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 see, standard. ऐसे अंदर T code के अंदर SC16 आएगा. This is a standard, standard, standard. So wherever standard, that means your system is good enough and secure enough. Whenever there is a maintained, agar if I add manually here something, say s underscore taboo underscore CLI, if I add this, you can see this got added into manually stage, manually. Okay, any doubts? नहीं ठीक है। So because the problem is with manual assignments is only when you are expanding that particular T code to other roles, तब वो मैनुअली वाला प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज यू विल नॉट बी एडिंग दैट, ये मैनुअली वाला, यू वोंट बी गोइंग इनटू ईच एंड एवरी टी कोड एंड चेकिंग व्हाट ऑल आर द डिपेंडेंट वैल्यूज, यू वोंट बी डूइंग दैट। तो मेजर चंक आपके काम का ये होगा, SU24 करो और इस टी कोड को ऐड कर दो रोल में, बस जनरेट द रोल एंड सेंड इट फॉरवर्ड। तो वो टेस्टिंग के टाइम पे वो वापस आएंगे, बोलेंगे कि नहीं, वी आर नॉट एबल टू execute the transaction, we're facing some more issue, and then again that's another rework that you have to take that role again, add the new authorization object, and then refer to the older role for the values inside it. So all that stuff is not important actually. Okay, and any doubt? कहीं पे तो देखा था एक न्यू और ओल्ड करके आ रहा था, मतलब किसी कहीं ओल्ड वीडियो में मैंने किसी के देखा था, साइड में न्यू एंड ओल्ड करके आ रहा था, साइड में That's मतलब इसी स्क्रीन में ही। okay. Just check this. I guess कुछ save करना था पहले। अच्छा, इसको save this, okay. If I go and change official data, ये आएगा ओल्ड, ओल्ड ओल्ड अच्छा। ओल्ड ओल्ड, बिकॉज यहाँ पे ये हम क्या कर रहे हैं ना, हम ऐड कर रहे हैं एक नया टी कोड,
and we are choosing expert mode for profile generation. तो वहां अच्छा, पे ये क्या तभी होगा? आता है क्या हाँ, जब एक तो यहाँ पे क्या होगा कि it is checking whatever was already in that role and हम्म। whatever new is being added to that role. So ये चीज नया है, ये चीज नया है. So it helps you to understand कि आपने क्या क्या add किया है. ओके ओके ओके। So that's how you get these values. हम्म। ओके। और बताइए. um, Regular transactions SU01, BSCG, SE16, SA38, SE01, and what else? SU10 and AM08, SM04, SM51, SM, बस इतना. इन टी कोड्स में कुछ भी इशू? हम्म, SU01, BFCG, SE16, SA38, SE01, SU10, AL08, SM04, SM51 and SU24. ये हमारा डेली का काम है. एंड अच्छा। ऑब्वियसली ST01 एंड SU23. तो ये टी कोड्स ऐसे हैं विच वी एनकाउंटर एवरी सिंगल डे. हम्म। तो इनमें किसी में भी कुछ भी डाउट कि SU01 में कुछ डाउट है, no matter how minute it is, no matter if there is a doubt, it's a doubt, so you can ask whatever you want to. मैंने आपको ये इसलिए बोला क्योंकि these are the first things that you will get hands on. तो करेक्ट। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा ठीक है SU01 is user maintenance, because you have GRC access request management, you won't be doing this in production system for sure. हम्म। Then second one is like PFCG. तो ये भी आप प्रोडक्शन में नहीं करेंगे, you will be doing this in development. वहां से फिर हम्म। यूए में जाएगा, क्यों क्वालिटी सिस्टम में जाएगा. क्वालिटी सिस्टम में जाने के बाद वहां पे आप यूजर क्रिएट करेंगे, टेस्ट यूजर आईडी बनाएंगे, देन यू विल गिव दैट यूजर आईडी फॉर टेस्टिंग. टेबल व्यू करने के लिए SE16 यूज करते हैं. SE16 में जाके we can go to any table and then search for data whatever you want. SA38 is nothing but executing a program. Okay. मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है because SA38 हम लोग यूजुअली यूज नहीं करते until and unless हम्म। somebody they want a manually a job run manually, only for that. हम्म। Because manually job run करने के लिए, so अगर मान लीजिए production में if somebody comes and ask you like every week कि ये वाला report please आप run कर दीजिए and I will like to view it, view the spool for that. when I say spool for that means उस report का output क्या आया है. So if you can print that and keep it, share it across, something like that. So इस case में you can just deny them कि नहीं, we are not supposed to be executing any reports in production system. Because what will happen is once you can execute SA38 में जाके you execute it, fine, you got the result, आपने उसको forward कर दिया. Then people they start making it a habit to ask you to you know run a program on their behalf. That should not be done. उसका workaround क्या होता है? You can ask them to get in touch with the ABAPer and create a custom T code just for that particular program. हम्म। For an ABAPer it's hardly a 10-minute job. उसको केवल एक प्रोग्राम कोड लिखना है, उसमें बस उस प्रोग्राम का रेफरेंस लिखना है, and then that would be good enough. That's it. And once that is done, you can do an SU24 for that, add it to one of the roles which this guy has, they are good to go, they can run that report on their own. तो बहुत सारी चीज़ इसमें लिंक्ड है एक दूसरे से. SE01 is nothing but creating transports. SU10 is nothing but changing mass users.
AL08 will give you a list of all the users in the system and all the instances. SM04 SM04 will give you the list of users in that particular instance. SM51 is switching a instance. Go to SM51, select any one of those instances and then you can log in on that instance. SU24 आपको अभी भी बताया ही है. फिर आता है हम्म trace, हम्म SU01 and SU53. हम्म, इन पे भी हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है. Anything, हाँ. any doubts about any of these T codes? अच्छा, पीएफयूडी को हमारा रेगुलर यूज नहीं है ना? नहीं. PFUD नहीं है का ना? PFUD is used for generating, yeah, mainly for user comparison, which is done by PFCG time dependency. So PFUD we hardly use because production system में obviously PFCG time dependency once in every day scheduled होगा, basis ने schedule करके रखा होगा. मतलब बैकग्राउंड में चलने के लिए. Background में हाँ. Once the business hours are over, they might have executed that in the background and वो program जब run करेगा, it will sync up हम्म, all the profiles. So you don't have to worry अच्छा. about that in production at least. For non-production they might not schedule this job, so depending on what kind of request you are working on, you need to push or maybe do a user comparison for those roles while creating user or maybe updating a role. हम्म. अच्छा, और एक्सपायर्ड प्रोफाइल्स को डिलीट करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए? Same PFUD. अच्छा. हाँ. अच्छा. So once a role is expired, उसकी प्रोफाइल अगर अभी हम्म भी मतलब असाइंड है, हम्म, तो आप PFUD चला दीजिए या PFG टाइम डिपेंडेंसी चला दीजिए. It will clean up all the expired profiles. It'll clean up all the expired profiles, add the new ones which are there. So whatever maintenance activity is required for profiles, it will just refresh that. It will just refresh from that point of time. कि जो जो इसके में भी valid है, उसको रख लो, बाकी सबको हटा दो. So it will do both the things. It will keep the ones which are active and it will remove the ones which were expired. अच्छा. और एसयूजीआर हम रेगुलर यूज में नहीं होता है, SUGR भी यूजर. हाँ, SUGR भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, but it's good to know. अच्छा. So because in production you might already be having user groups. जैसे people they keep user groups like this: security, security, basis, BW underscore consultant, something const, and what else? Firefighter, firefighter, or super user, super. So these are the usual groups in production. So at the time when you join, they will be in the system already. So you don't need to right away go in and start creating user groups. If there is a requirement, that will come from proper channel, and based on that, you have to act in that system, and you can create a user group if you are authorized to. हम्म हम्म. और सॉक्स जो कंप्लायंस होता है वो हर कंपनी के लिए अलग होता है क्या, या फिर जनरल कुछ ऐसा ही हाँ, मेथड? जनरल गाइडलाइंस होते हैं उनके, अच्छा. based on which they evaluate each and every control. आपने अपने जो सिस्टम में लगाए हुए हैं, they evaluate those controls. Very strict जो audit requirements होता है, that is for finance team, because they are directly dealing with the revenue which the company is scoring. So for FI there's a very strict audit requirement. For other modules it is like okay, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है. If there are mitigation हम्म controls तो वो भी चलेगा. But for FI, if there is a mitigation control, then they would require proofs of why
this is declared as a mitigation control. This is a high risk or medium or whatever. And since it is related to FI, why this risk was declared as mitigated. So in those cases, they need evidences, the reasons why they were maintained such a way, things like that. So SOX का requirement all over, it's same. Like the basic guidelines are same. हर एक कंपनी का अलग तरीका होता है उसको अचीव करने का. Like in our previous examples, right? We were discussing about a small plant जहाँ पे एक बंदा है and we are giving him maybe Mm-hmm. risk वाला issue. He can mitigate those at least to keep him safe. उसी केस में the audit will come and they will say कि नहीं आप that guy is doing more work than required, so you have to actually hire a new guy, and then with that you will not be getting these SOD risks जो आपको mitigate करना पड़े, and this guy will be responsible for doing other stuff whatever they take away from the previous guy. So basically they will try to find out ways and means to find out a loophole in your system. Why this, why that? They will ask so many questions. So those requirements, they are like internal or external. Both the teams will do the same sort of job, both ways. So they are concerned on what is being delivered to. आई थिंक फाइन, मतलब जितना भी पढ़ा है शायद हो गया। Okay. हम्म, कुछ और क्योंकि ऐसा जो सारा आपने इंटरेस्टिंग देखा हो कहीं पे जो हमने कवर नहीं किया. Anything, could be anything, not related to even ECC and GRC, generic also. अच्छा, कुछ भी हमको जैसे एसएसएल क्या है जानना जरूरी है क्या? क्या सिक्योर चीज. सॉकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL. एसएसएल। नहीं, नहीं ना, नहीं. नहीं ना। हाँ, SSL, how SSL works, how SSO works, how SNC works, you don't have to worry about these. अच्छा। ये बेसिस का, मतलब ये बेसिस का काम है to understand these. Obviously you, if it is a good to know about, लेकिन mandatory नहीं. हम्म, So once you start working like 6 months down the line, when you know about SAP at least, then you can start learning about how is uh, SNC set up, or maybe how SSL works, what are the connectivity layers and all. That maybe at a later point you can, just for your reference and your knowledge. There's nothing, no implication in what you do in ओके ओके। cybersecurity work that you will be doing. Nothing related in that. और यूएमई, वो भी बस थियोरेटिकली होगा ना? हाँ, UME भी theoretical. अच्छा। और डी प्रोविजनिंग क्या होता है? यूजर प्रोविजनिंग तो आपने जो बताया, वो डी प्रोविजनिंग Deprovisioning means you are taking away some access. ओके ओके ओके। So you are removing some roles. So how this and when this is achieved is when we do UA auth. This is user access review. So अच्छा। according to company policies, company norms, every year, it could be a yearly activity or it's half yearly activity or a quarterly activity, whatever the company wants to follow. So in this activity, you prepare a list of all the roles assigned to everybody, and then you sort them with the role names. Okay. तो एक रोल नेम के लिए जितने
you approach that role owner and ask him, Hmm. are all these users valid users for your role? Hmm. Then, based on what he says, if he says yes, then he would approve that request and the deprovisioning won't happen. For cases wherein this role owner denies, saying that no, no, I don't know all of these people, only these many people should get access. तो जिनको access के लिए approve करेगा हम उनको छोड़ देंगे and बाकी लोग के लिए we'll remove that particular role. अच्छा. So that is nothing but deprovisioning. तो GRC में भी deprovisioning की जा सकती है. You can go to SAP GRC, access request management में जाइए, you give the role name, okay, and then valid through date में, at least valid through date में, give like today's date. It'll go for Hmm. approval के बाद में it'll get implemented into the system, it gets synced to the system. Then आज रात से ही the system would consider that particular role as expired और वो decode I will lose access to those decode which are there in that role. Hmm. Okay. So this is basically a part of user access review. अलग से भी होता है Hmm. if your role owner feels कि नहीं नहीं ये वाले users they are not authorized for my roles, तो उस केस में भी होता है, then they are like नहीं इसको नहीं दे सकते हैं, then they ask us to remove or deprovision, वही GRC request के through. If it is happening Hmm. via user access review, then Hmm. mass changes happen because there could be multiple users जो they lose access. Hmm. Anything else you want to ask? नहीं So आज के हम लिए क्या आई करेंगे थिंक. ना, जैसे हम्म. ये हम लोग जो सेशन चला रहे हैं we'll हम्म. continue. तो ECC का हम और देखेंगे, GRC में what all things we can think of, at least from learning perspective. उसके बाद में ओके. coming Saturday या Sunday में we will do हम्म. a session of reverse KT, wherein you हम्म. will tell me हम्म. what we need to do. सिस्टम में इन स्कोप एक्टिविटीज क्या होते हैं सिक्योरिटी के लिए, एक एक एक्टिविटी में आपको क्या क्या करना होता है, ओके. सो वील डू अ स्मॉल अच्छा. सेशन ऑन दैट. तो उसमें क्या होगा, इट विल रिवाइज वॉट एवर यू हैव लर्न सो फार एंड ऑल्सो इट विल गिव अस अ चांस टू एक्सप्लोर एनीथिंग दैट वी माइट हैव मिस्ड, बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स एंड मल्टीपल लेवल्स विच कैन बी मिस्ड. जैसे SE16 में हमने देखा था कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, कैसे क्या लगाना है. Very हम्म. high chances of missing things like table group. What is a table group? How do we find if your table group contains a particular table? So there's a high हम्म. chance that things like that might get missed. तो हम लोग वो भी उसको हम्म. जब टच करेंगे we'll come to know that कि हाँ वो मिस हो गया था, तो उसके लिए ये related documentation या ये related topic ऐसा है. हम्म. So that will save our learning time as well. क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से सीखा और उधर से दिमाग से डंप करते करते निकल गया, अब वो रिकलेक्ट नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है. एटलीस्ट फॉर द द स्टार्टिंग, जो आपको स्टार्टिंग में हम्म. काम करना है, एक्चुअल काम जो करना है. टेक्निकल इज नो नो प्रॉब्लम. टेक्निकल एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल इज ओनली नीडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. एक बार अंदर जाने के बाद इतना टेक्निकल करने का कोई जरूरत नहीं है. इफ यू नो what are your day-to-day activities and how they will be done, you are pretty much covered. No need to worry about it. ओके. ठीक है फिर. ठीक है. हम्म. Okay, so we still have 10-15 minutes more if you want to ask anything else. Apart from this SAP, we have multiple tools like SharePoint, like Remedy obviously, and हम्म. like secret server तो मैंने आपको बताया था एक बार. I just mentioned that. Secret servers, हम्म. they are meant for securing passwords for on a longer run. हम्म. And मोटा मोटा देखा जाए तो ये शेयर पॉइंट एंड लाइक रेमेडी, these
are the extra tools that we use. SharePoint is used for storing documentation. मान लीजिए आपने किसी बड़े काम के लिए you started working and then you felt ideally for every new T code that is created or for every project that is rolled out, you should create a technical specification document. That's an ideal scenario. तो और ये जितने भी documents होंगे, this will be stored on the shared drive or maybe the SharePoint under your team name. So SharePoint में एक folder होगा, security एक folder होगा, basis. So security will save all the SOPs, standard operation procedure documents under that particular folder. So that is something Mm-hmm. which is like, yeah, you might have to follow religiously because you will be, directly interacting with the client and nobody else will be there to, keep reminding you कि अरे वो भी बनाना है वो भी बनाना है. So at the time when you get KT, उस टाइम पे आपको ये भी पता चल जाएगा whether or not you need to create or not create the technical specification documents. Mm-hmm. Okay. Apart from this, ECC and GRC, we also have like different system. Why they're different is first is because they perform a different function. They perform a different kind of job than ECC and GRC. The second is their authorization object set is entirely different. कुछ चीजें सेम Mm-hmm. रहेंगी जैसे SU01 सेम रहेगा, SU24 सेम रहेगा, PFCG सेम रहेगा, but a few things might get changed. Like अभी ECC में हम लोग authorizations पढ़ रहे हैं, right? Mm-hmm. Yeah. BW में इसी तरीके से analysis authorizations होता है. अच्छा. So basically that what it does is it can read a lot of historical data and do analysis on top of it. Mm-hmm. तो हम लोग जो visualize करते हैं, we visualize things in 2 dimension and 3 dimension. When it comes to analysis authorizations, they you can achieve a higher degree of accessing things, and these will be stored in like info cubes. When we talk about info cubes, info areas, Mm-hmm. so like these terminologies are different in BW system. So Okay. as and when we come across this system, we will try to learn more on what analysis authorization is, how do we create one analysis authorization, how does it work on the system. So we will try and see if we can cover up these topics as well. Okay. 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 Mm, और रेमेडी के लिए I'm not sure whether your company would be worried about SLAs, but when it Mm-hmm. comes to SLAs, yes, there's a section in Remedy where you can download SLA reports for entire month, where you can see how many tickets were closed by your team members in the previous month. So because I know all this because I've worked on extracting reports and Okay. worked extensively. So these are like the continuous improvement plans that we used to propose. That for the past month we saw there were 500 tickets for password resets. So as a continuous improvement plan, I propose to create a password reset tool. Mm-hmm. This tool will help reduce us with so many ticket numbers in a month, 500 tickets. So out of 1200 tickets, if I can reduce 500 tickets, obviously that's a good value add. So the business is getting benefited from it. Because the business first is they will have to pay less. If they are paying for like per ticket basis, they have to pay less. If they're not paying Mm-hmm. per ticket basis, the turnaround time is less. SAP के system में lock हुए, password भूल गए, they can just log into the password self-service tool and they can reset their own password. So there's a lot Mm-hmm. of value add in that particular scenario. तो इस तरीके से people, the companies, they usually ask for CIs. When I say CI, I mean continuous improvement activity, CI. So a lot of companies they focus on CI, how many CIs were given by whom, and based on that, sometimes that's an also that is also a criteria for giving you promotion or progression on your job roles. Saying Mm-hmm. कि भाई एक टीम है उसमें से 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग में 9 लोग 10 के 10 अच्छा काम करते हैं,
they do well, but how do you grade somebody better than somebody else based on CI? How many vulnerabilities you were able to find and fix them? तो there could be anything. जैसे RSC में जैसे हमने काम किया, RSC में SAP और SAP न्यू दिया हुआ है RSC यूजर में. I started working to remove those SAP all and SAP new access. So that was a continuous improvement plan that you can propose to your client. Something like that. Okay. So this is anything else? ये ठीक हो चाहिए. वही मैंने सारे सेशंस तो कवर नहीं किए हैं, मतलब दोबारा, तो मैं थोड़ा फिर देखूंगी, तो कल कुछ आए तो डाउट फिर हाँ पूछती हूँ. ठीक है, बिल्कुल श्योर. ऐसे कर सकते हैं हम लोग. तो कल के सेशन में विल मैं ट्राई करूंगा जीआरसी का कुछ जुगाड़ हाँ करने जी. का. अगर हो जाता है इट्स वेल एंड गुड. आई थिंक सो हो जाएगा. आई एम लाइक प्रीटी पॉजिटिव, अराउंड 80% आई एम पॉजिटिव कि हो जाएगा. और ओके. विल आल्सो हैव सम मोर क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क. ठीक ओके. है ना? एंड ओके. तो उसके लिए यू जस्ट व्यू दोस टू वीडियोस जो सबसे इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट इज हाँ व्यू हाँ. दोस. थर्ड विल बी जीआरसी रिलेटेड. अगर उसमें से ओके. किसी में ओके. भी आपको लग रहा है कि ये वो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए एक बार, सो व्यू हम्म. दोस. तो दैट विल कवर अप फॉर योर स्टार्ट. फिर उसके हम्म. बाद में हम लोग अगले हफ्ते में फिर एक और सेशन रख लेंगे वेयर इन विल टच ऑल द टेक्निकल थिंग्स. कि टेक्निकली हम्म. हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए. व्हाट आर द प्रोज हम्म. एंड कॉन्स ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली. तो वो सब हम लोग टेक्निकल डिस्कशन अलग रखेंगे. एंड जो आपके ऑफिस का रिलेटेड काम होगा उसको एक अलग डिस्कशन रखेंगे. ठीक है. अगर मोटा मोटा बोला जाए कि व्हाट यू नीड फॉर योर वर्क टू बी डन आज के दिन तक, शुरू से लेके अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, दिस इज मोर देन एनफ. ओके. ओके. या दिस इज द एंड टू एंड एक्टिविटी दैट यू विल बी डूइंग. एंड टू एंड एक्टिविटी के लिए ओनली 5 सेशंस आर इम्पोर्टेंट. 2 सेशंस ईसीसी वाले. ईसीसी क्या, वो तो जेनरिक सेशंस है, वहां पे हमने रेमेडी में रिक्वेस्ट रेज किया, वो सब देख रहे थे. तो हम्म. 3 सेशंस, 2 सेशंस वो एंड 3 सेशन जीआरसी वाले, ईएएम एआरएम और एआरए का. So these 5 sessions and you are good. Okay. ओके. ओके. So accordingly you have to like prepare. तो आप इसको इन 5 वीडियोस को आप you have to view them and let me know if you have any doubts. At least इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. You should be like वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. ये क्या प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है, वो क्या प्रोसेस है, वो वैसा प्रोसेस है. So these 5 videos should be on your fingertips. बाद बाकी टेक्निकल इज नॉट अ प्रॉब्लम. टेक्निकल में तो एटलीस्ट यू कैन ऑल्सो गो टू गूगल एंड फाइंड आंसर्स टू व्हाट यू वांट टू नो. देयर इज ऑलवेज अ वे देयर. सो हम लोग की जितनी नॉलेज है 80% इज लाइक गिवन बाय गूगल. ओके. सो रिमेनिंग 20% इधर उधर से पता लगा कुछ नया, सो वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. और बाकी चीजें ऐसा होता है काम करते 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 करते. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टुडे यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच टेबल contains table to table group mapping. There's a table for that. So now you don't know the answer. How do you do that? Either you go to SC16, start searching for table names or maybe some text. Either do that or just go to Google and type your query, which is SAP table for finding out table group and table mapping. You will get the answer. Maybe in not in one shot, maybe 2 or 3 shots, you will get it. The table name is TDDAT. So that's the table data for structures. So that's how you can explore. So technical, I'm not worried until you are like into a company. जब तक कंपनी में नहीं हो तब तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल पढ़ना. Once you are in, you need to, हाँ. that's what you prepared for the interview. That is for ओके. sure, पक्का एकदम 100%. अभी इसीलिए ओके. दिव्या को भी मैं I'm trying to tell her more of what we are doing these days. जो भी ओके. हम लोग के सेशन चल रहे हैं, I'm trying to tell her. इसीलिए मैंने उसको बोला कि तुम ज्वाइन कर लो, तुम कॉल में रहो, just keep listening because जो इंटरव्यू के टाइम पे तैयार किया था that's not much relevant अभी जो काम करते हैं. या. You
बिकॉज इंटरव्यू में की तैयारी के लिए हम लोग का तैयारी करते हैं हाथी की, और काम करते हैं बिल्ली का. इट्स दैट मच ऑफ अ डिफरेंस. बिकॉज आप कभी भी एसयू 25 नहीं करोगे. हाँ एसयू हाँ 22 में आप जाके चेक भी नहीं करोगे कि स्टैंडर्ड एसएपी ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स क्या थे. लेकिन इंटरव्यू में पूछते हैं स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स देखने होंगे तो आप क्या करोगे. सो थिंग्स लाइक दैट. हाँ हम पढ़ते तो बहुत सारा है लेकिन उतना सही काम के लिए उतना जरूरी नहीं होता है. हम्म, ओके. हाँ, ठीक है फिर. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग सेशंस. ठीक है.